Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning. Good morning. So Good it's morning, sir. almost 9. Good So morning, we'll sir. get started. Walaikum assalam. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning. We already had a lecture on outcome-based education the other day. So in the outcome-based education, one of the important factors are the contributions by alumni. Now, everybody go on mute, please. Good morning, sir. Everybody go on mute. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Please mute yourself, everyone. Good morning, sir. Everyone, Good please morning, mute. sir. Good morning. Please mute yourself. Please mute yourself, everybody. Good We morning, sir. started the discussion. Mazhar Good Sahab, are morning. you there? Can you mute the audience, please? धनराज सर प्लीज म्यूट कर लीजिए धनराज सर भाई वो तेरा है Everybody, please mute yourself. Hello, Mazhar Sahab, are you there? मदर साहब आप म्यूट कीजिए सबको सुन नहीं रहा है वहाँ पे म्यूट नहीं हो रहा है म्यूट कर ले Everyone, please mute. धनराज जी प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए सर। मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, आप प्लीज म्यूट रहिए। या मदर साहब मुझे तो अनम्यूट कर दें। सर अनम्यूटेड हैं आप सर। चलिए ठीक है, रेस्ट एवरीबॉडी इज म्यूट यार, राइट? ओके मैंने फाइन। आपको होस्ट कंट्रोल दे दिया सर मैंने आपको, इसलिए। अच्छी बात है, ठीक है। नहीं उसके लिए मुझे वो करना पड़ता है ना, स्लाइड शेयर खत्म करना पड़ता है। जी 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 करने के लिए प्रॉब्लम नहीं है। मेरी स्लाइड्स मूव हो रही हैं? Yes, हाँ sir. सर जी सर बिल्कुल यस सर Okay, fine. Now everybody please be on mute. So one of the important components for outcome-based education are the alumni. So we have to see how can we manage the alumni relations. So this I'm speaking out of the experience that I've had being the chairman of the Alumni Affairs Committee for maybe more than 5 years now. So a lot of things that I've learned over these years, I'm going to share with you in this presentation. So starting, it appears that being the head of a department is a very difficult task because you have to manage so many students, you have to manage many faculty members, non-teaching staff and all. But when you become the principal of a college, then it is like being the heads of the heads. There are so many more departments added, बहुत सारे students बढ़ गए, non-teaching बढ़ गए, and it altogether takes a new dimension. Again, being the provost or the warden of the students' hall of residence, that has another dimension of the problem in the administrative domain. The same set of students who are so respectful to you in your classroom, when you go to their halls of residence, they have an altogether a different attitude.
They are in their own backyard, so you have to manage them, and it's a 24/7 job, because students, they are full of energy. They may create any trouble at any point of time, in the night, in the day, and you have to rush in order to solve the things. Then, being the dean of alumni affairs, that is an addition of all the problems put together, because you have to deal with not just the students, because when it comes to the alma mater, all the alumni, they behave like students. बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं वो, उनको वही सारी यादें अपने ज़माने की सब ताज़ा हो जाती हैं. सीनियर लोग भी यहाँ जब अपनी alumni बनते हैं और alma mater की बात होती है, तो they become so childish. And also all of them are very experienced. Some of them may be heads, some of them may be principals, some of them may be businessmen, entrepreneurs, managing directors. So you have to deal with a set of people who are diverse, very diversified set of people you have to deal with. तो dean of alumni affairs में इन ऊपर की तीनों problems का समझिए आप combination आपके सामने होता है. Or on the lighter side, the most difficult of all the problems may be engaging a class like what I'm doing today. Teaching the teachers is the most difficult task maybe, because all of you, I'm sure, are better teachers, are very good teachers. So whosoever speaks to you, you are going to judge whether he is teaching better than you or at least as good as you teach. तो थोड़ा सा एक challenging task होता है for teaching the teachers. तो बहरहाल, moving on, Dean of Alumni Affairs has to basically manage students of all ages. वो अभी फ्रेश ग्रेजुएट भी होंगे, और आज से अगर आपकी पुरानी यूनिवर्सिटी है, so they may be graduates of as old as 50 years ago, they may have graduated, 60 years ago they may have graduated. And it is more challenging than adult education even, because you are managing students who do not have to pass. अगर आप स्टूडेंट्स को मैनेज करना हो, तो एटलीस्ट दे हैव देयर डिग्री एट स्टेक. Alumni तो वो है जो अपनी डिग्री ले चुके, they have already graduated from the college and they don't have to pass anymore. उनको कैसे चैलेंज किया जाए, उनको कैसे, उनके चैलेंजेस को कैसे फेस किया जाए. So it is the most demanding job, the most thankless job. Why? Because all the bad things will come to you. कोई जरा सी ऊंच नीच हुई, आपको ब्लेम मिलेगा कि Dean of Alumni Affairs is not working well. And all the good things that you do, the credit goes to the Vice Chancellor. तो आपको तो कुछ मिल ही नहीं रहा अच्छा, आपको जितनी बुराइयां आ रही हैं वो आपके ऊपर आ रही हैं, और जो अच्छाइयां हैं वो the credit goes to the Vice Chancellor. So it is the most thankless job. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज हम समझ लें. देखिए, वर्ड alumni is the male plural मेल जेंडर के लिए alumni है, मेल सिंगुलर के लिए alumnus है. ऐसे फीमेल प्लूरल के लिए alumni है, और फीमेल सिंगुलर के लिए alumni है. तो ये हमें जहन में रखना है, alumni, alumnus, alumni and alumna. Because at times the alumni, they mind it, particularly when you are talking to the lady alumni, they might say that why are you using alumni, we are alumni. तो जरा जेंडर सेंसिटिव होने में हम लोगों को ख्याल रखना पड़ता है. While writing the gender neutral term may be alumni/AE, which includes both males and females. और ये तो खैर इंग्लिश ग्रामर की बात है कि one of the के साथ हम प्लूरल ही यूज करते हैं. So we don't have to use one of the distinguished alumnus or alumna, बल्कि the correct word is one of the distinguished alumni or alumni, है ना. तो ये जरा हमें रखना पड़ेगा, particularly when you are the Dean of Alumni Affairs, और उस वक्त आप ये वर्ड्स को मिक्सअप कर दें तो that becomes even more complicated. ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं. Who are the stakeholders of an academic institution? Students, yes, obviously they are the most important stakeholder. कि कोई भी academic institution students के बगैर तो चलेगा नहीं. Next on the list are the faculty members. They are also very important stakeholder. Then the other staff members,
the support staff, the technical staff, the non-teaching staff, everybody. Parents, they are also the stakeholders because they are investing money, they are paying the fees of their children. Then employers, professional bodies, industry, they're all the stakeholders in an academic institution because the products, they are to be absorbed by the employers. The professional bodies have to gain from them. The industry का impact हम यहाँ पर नहीं देखते, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में आप जाइए तो इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री इंटरेक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग. The other day I was mentioning that Silicon Valley is Silicon Valley because you have the Stanford University and the University of California at Berkeley there. They are the main reasons of developing the Silicon Valley. The graduates of these universities, they have the startups which became success stories. If you read the history of Google, these two PhD students, Larry Page and Sergey Brin, they were the PhD students at Stanford University. And they've come up with an algorithm that they were very excited about. So one day they came to know that their supervisor is being visited by one of the top industrialists. So they were just waiting outside the office of their supervisor for the industrialist to come out. And when he came out, by the time he walked to the parking lot to his car, on the way, they could convince him with their algorithm so much that after sitting in the car, he pulled out his checkbook, wrote a check for $100,000, wrote pay Google Inc., signed it, and drove away. So Brin and Page, they write in their autobiography that for full 2 weeks, we did not know what to do with that check. That was just sitting in our drawers. After 2 weeks, we decided to open a company with the name Google because only then the check could be cashed. And they started a Linux cluster, crawled the web, started doing web searching. And now they are such a big company. They boast of the largest Linux cluster in the whole world. And they have done some very innovative things in Google. मतलब कोई भी सक्सेस स्टोरी जो है वो सिर्फ लक से नहीं बनता है. They have some very innovative things to do, right? For example, और सब कंपनीज में 5 days week है, गूगल में 4 days week है. उन्होंने ये कहा है कि 5th day पे you come to the company but you do whatever your interest says. You do according to your interest. तो सरप्राइजिंगली फ्रॉम दैट 5th day वर्क, और ये उन्होंने कंडीशन लगा दी है कि आप करें तो अपने इंटरेस्ट से, लेकिन जो कुछ करेंगे उस पर राइट हमारा है. So from that 5th day work, many good and useful Google tools have come up. तो उस दिन जब आदमी ने आराम से अपने को without any pressure काम किया तो many Google tools, useful Google tools have come up. अच्छा, गूगल कैंपस में खाना फ्री, जिम फ्री, यहाँ तक कि लॉन्ड्री आप अपनी करा लीजिए. आप अपने कपड़े गंदे ले आइए, उनको दे दीजिए, शाम में आपके कपड़े धुले हुए प्रेस किए हुए आपको मिल जाएंगे. कार सर्विस फ्री, बेबी सिटिंग तो है ही. व्हाई दे आर डूइंग दिस? आप अपने घर पे लॉन्ड्री करते या कार सर्विस कराने ले जाते तो वो टाइम आप गूगल को दे दीजिए, गूगल आपका काम कर देगा. ऑब्वियसली यू विल बी डूइंग मच मोर यूजफुल वर्क, राइट? So they have done some very innovative things. ऐसी टेस्ला कार कंपनी है. All the big car companies, they are in Michigan. Ford, Chrysler, ये सारी Chevrolet, ये सब मिशिगन में. लेकिन टेस्ला कार कंपनी is in Silicon Valley because more than a car, it is a computer. है ना, इसमें इतना उसमें मशीन लर्निंग वगैरह उन्होंने की हुई है कि इट इज मोर लाइक अ कंप्यूटर. कार तो उसमें है बहुत कम है, आपको एक बैटरी लगानी, एक मोटर लगाना है, कार बन गई. और कुछ तो करना नहीं, ना उसमें कंबस्शन इंजन है, ना उसमें गियर है, कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है. तो दे हैव लॉट ऑफ मशीन लर्निंग. अच्छा, फिर उन्होंने भी इनोवेटिव चीजें की हैं. दैट इज व्हाई दे आर सच अ सक्सेसफुल कार कंपनी. पहली बात तो ये कि पूरा प्लांट जो है वो डार्क में है because all the robots are working there, no human beings, so you do not need to have
विजिबल लाइट, इंफ्रारेड सेंसर से पूरी कंपनी चल रही है ना, और पूरी इंच टू इंच पैकिंग की हुई है, बिकॉज if human beings are moving around, you have to give extra space. With the robots, you know their path very precisely, तो आप इंच टू इंच पैकिंग कर सकते हैं, और राउंड द क्लॉक प्रोडक्शन हो रहा है, बिकॉज those robots don't have to go home. तो they're saving lot of money in terms of energy because the entire plant is working in dark, और स्पेस सेव की हुई है उन्होंने, इंच टू इंच पैकिंग की हुई है. तो all these innovative things, they basically come from the industry and the alumni of those companies. इसलिए मैंने आपको ये सब बैकग्राउंड बताई. So they are a very important stakeholder in an academic institution. फिर उसके बाद मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट है, सोसाइटी है. आप ये सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट अगर एड दे रही है तब तो स्टेक होल्डर है. इफ द गवर्नमेंट इज नॉट एडिंग एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, दैट्स अ प्राइवेट और सेल्फ फंडेड इंस्टीट्यूशन, देन व्हाई गवर्नमेंट शुड बी अ स्टेक होल्डर. तो मैंने आपको बताया, देखिए गवर्नमेंट कम से कम अप्रूवल देगी, एक्रेडिटेशन देगी, है ना. यूनिवर्सिटी बनना है तो लॉ पास करके देगी, तो गवर्नमेंट तो स्टेक होल्डर रहेगी ही रहेगी. सोसाइटी एट लार्ज, और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट द alumni and the alumni. They are, if not the most important, then certainly they are one of the important stakeholders of an academic institution. अब चलते हैं आगे, देखते हैं alumni का क्या contribution रहता है. If you talk about the Aligarh Muslim University, we have a rich legacy of our alumni. Our founder was Sir Syed Ahmad Khan, and we are very proud of our culture, traditions. You know, there is always this issue of seniority here. जब भी दो alumni मिलते हैं तो एक दूसरे के ऊपर अपनी seniority assert करते हैं कि मैं तुमसे senior हूँ, है ना. तो दो alumni मिले और आपस में इंट्रोड्यूस किया, फिर उसके बाद एक ने कहा अच्छा मैं तुमसे सीनियर हूँ, तो उन्होंने एक अपने सीनियर का नाम लिया, अच्छा आप उनके बैच के होंगे. उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं तो और भी सीनियर हूँ, तो उन्होंने अपने एक और सीनियर का नाम लिया, अच्छा आप उनके बैच के होंगे. उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं तो और सीनियर हूँ, फिर उन्होंने अपने एक सुपर सीनियर का नाम लिया, अच्छा आप उनके बैच के होंगे. तो अब ये कहेंगे नहीं नहीं मैं तो उनसे भी सीनियर हूँ. अब ये थोड़ा इरिटेट होके कहने लगे अरे क्या आप सर सैयद अहमद खान से भी सीनियर हैं क्या, द वेरी फाउंडर, उनसे भी सीनियर हैं क्या आप. तो दीज आर दी यू नो द सॉफ्ट साइड्स of the cultures and traditions that prevails. And because of this rich culture, we have been able to produce 2 Bharat Ratnas from our university. Khan Abdul Ghaffar Khan, who was called the Frontier Gandhi, and Dr. Zakir Hussain, who later became the President of India. Both of them are alumni. So we have produced 2 Bharat Ratnas from our university. We have produced 8 Padma Vibhushans, 27 Padma Bhushans, and around 50 Padma Shri awardees from the Aligarh Muslim University. So all these are the national level award winners. In fact, one of our alumni, Dr. Samina Salim, who's based in Houston, she had compiled a book on all these national awardees. You know, उनका brief life sketch and सब कर दिया हुआ है. अच्छा, besides that, these are the names, you know. Bharat Ratna, Padma Vibhushans, Padma Shri, all those which we have produced from here. Besides that, we also have produced Janpeet awardees, Sahitya Academy awardees. We have produced one Olympic gold medalist from our university, Zafar Iqbal, Olympic gold medalist in hockey, Dr. Zafar Iqbal. We have given quite a few head of states and governments. His Excellency Amin Hilmi Didi, the President of Maldives, had been our alumna. His Excellency Liaqat Ali Khan, Prime Minister of Pakistan, Finance Minister in the interim government headed by Pandit Jawaharlal Nehru. His Excellency Mansoor Ali, Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh. His Excellency Muhammad Hamidullah Khan, ruler of princely state of Bhopal, Chancellor Chamber of Indian Princes. His Excellency Dr. Zakir Hussain, as I just now said, President of Indian Republic. Mrs. Abida Ahmad, wife of Shri Fakhruddin Ali Ahmad, who was the president, the first lady of the country. So that way we have a very rich legacy of the alumni that have emerged from our university.
अब थोड़ा सा हम लोग ये सोचते हैं कि why alumni? Why are the alumni so important? And how can they contribute? Firstly, they are the greatest test to the strength of the college's program. जितना हमारा alumni base strong होगा, उतना हमारे college की reputation और perception strong होगा. The alumni, they have the emotional attachment to the college. They have spent the prime time of their life in the college, so obviously they are most attached to the college. They also have the experience of industry and outside world to help us with. They have a better understanding of colleges' needs and requirements because they have lived the life here. They have the ability to act as a bridge between institute and industry, something which we are lacking. Industrial problems are not coming to the university, and the university or the institute, they are not solving such problems which may be applicable in the industry. So obviously, this disconnect can be bridged by the alumni, because on one side they are the product of the institution, and on the other side they are the employee of any industry. Every great university has a strong, well-connected alumni network. अभी हम आगे चल के बात करेंगे, दूसरी यूनिवर्सिटीज में देखेंगे कि alumni ने कितना कितना contribute किया हुआ है. So these are the salient points why alumni are important to any alma mater. Why should they come forward? क्यों हमारी alumni क्यों मदद करें? सबसे पहला तो एक क्रेज होता है tracing of old friends and fellow alumni. That is why they get back to the alma mater. Also to replicate the support which was provided to them when they were students. जब वो स्टूडेंट थे, किसी ना किसी alumni ने उनकी हेल्प की होगी, तो अब वो चाहेंगे कि हम उसको पे बैक करें. They would like to help as at least as many students as the alumni have helped them. वरना उससे ज्यादा भी आगे भी निकलना चाहते हैं. So the bottom line is, by helping the institution become bigger, stronger, and more successful, alumni are also enhancing the value of their own degree qualification. तो ये एक mutually reinforcing relation है. Better the institution becomes, better are the alumni, and better are the alumni, better is the institution. So एक दूसरे को मदद कर रहे हैं दोनों rise करने में. जितना इंस्टीट्यूशन बड़ा होगा उतने alumni का रेपुटेशन बढ़ेगा, जितना alumni का रेपुटेशन बढ़ेगा उतना इंस्टीट्यूशन का रेपुटेशन बढ़ेगा. So in that sense, Aligarh Muslim University is not just an institution, it is a mission towards the larger vision of the country. है ना? अभी विजन मिशन का हमने पिछले लेक्चर में डिफरेंस देखा था. तो अगर विजन ऑफ द कंट्री है, तो every university, every institution has to serve as a mission towards achieving the vision of the country. What makes a college better? Curriculum? Yes, definitely. Curriculum counts a lot. Obviously, this curriculum has to be run on the students. The faculty have to teach that curriculum and hone these students. Faculty carry out research, and research requires infrastructure. और जितना अच्छा infrastructure होगा, उतना आप ambitious curriculum आप afford कर सकते हैं. तो ये एक development wheel है किसी भी college का. इसका जो center piece है, वो alumni है. Alumni can help us in designing and running a good curriculum. These alumni can get us good students. आगे बात करेंगे कैसे alumni help कर सकते हैं अच्छे students हमारे institution में लाने के लिए. Alumni can help us in getting us good faculty members. Some of them may become faculty themselves. Otherwise, they can get us good faculty members. Alumni can help us in research in so many ways. आगे इसको भी हम डिटेल से बात करेंगे. इक्विपमेंट दे सकते हैं, फंडिंग दे सकते हैं, लैब सेटअप कर सकते हैं, इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड लैब्स दे सकते हैं. Alumni can help us in developing infrastructure. बिल्डिंग दे सकते हैं, है ना, ऑडिटोरियम दे सकते हैं. So many things they can help us with. तो ये इस पूरे डेवलपमेंट व्हील का जो सेंटर पीस है वो alumni है.
So that is why alumni are so important in making any institution better and better. What can be the role of alumni or alumni? सबसे पहले बिल्डिंग द रेपुटेशन ऑफ द कॉलेज. हम सबको पता है कि जितना रेपुटेशन अच्छी होगी, परसेप्शन अच्छा होगा, उतने स्टूडेंट्स मिलेंगे, फैकल्टी मेंबर्स मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, फंडिंग मिलेगी, सारी चीजें रेपुटेशन के ऊपर डिपेंड कर रही हैं. The problem may be that unfortunately AMU has always been at the receiving end from the media. Many small incidents of the university are blown out of proportion for political reasons or for otherwise. कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है, उसका छोटा सा कोई इंसिडेंस होता है, उसको बहुत ज्यादा बढ़ाकर मीडिया दे देता है. पब्लिक starts thinking negative about that academic institution. So it creates a very bad illusion and reputation in public opinion, which needs to be countered for the sake of truth and correctness. है ना, हम ये नहीं चाह रहे कि हमको exaggerate किया जाए, लेकिन truth should prevail. जो सही बात है वो कही जाए मीडिया के अंदर, so we'll be happy. है ना, because we have more positive things to tell than negative things that should not be told, right? Moreover, geographically, the location of Aligarh isn't very good in terms of reach. आप ऐसे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई इंस्टीट्यूशन अगर अच्छा है तो ज्योग्राफिकल लोकेशन डजंट मैटर. To some extent you may be correct, but to a large extent I think the location matters. And I'll tell you out of my own experience. I have been an alumnus of IIT Kanpur. I did my master's from there. I've been an alumnus of IIT Delhi. I've done my PhD from there. Both of them are very premier institutions. IIT Kanpur or IIT Delhi. Both are very premier institutions. IIT Kanpur is academically better. ज़्यादा intense है उनका curriculum, बहुत focused research है. Faculty members are very dedicated and motivated. But IIT Delhi receives better ranking. Why? Because it is in Delhi. They are reaping the advantage of being in the national capital region. बहुत सारी कंपनीज उनको वहां मिल जाती हैं, ज्यादा कंपनीज उनके कैंपस को विजिट कर लेती हैं. Many companies have set up their solutions research center in the IIT Delhi campus. IIT Kanpur कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि IIT Kanpur जाने के लिए they'll have to take extra pain. They'll have to fly not just to Delhi but another flight to Lucknow, and then from Lucknow they have to drive to Kanpur. You know, train से भी अच्छा खासा वक्त लगेगा. So why take extra pain when IIT is there in Delhi? So IBM Solutions Research Center is situated in Delhi. Bharati School of Telecom is situated in IIT Delhi campus. So IIT Delhi enjoys the advantage of being in the national capital region over IIT Kanpur. तो geographical location का थोड़ा तो फर्क जरूर पड़ता है. Aligarh Muslim University may be a very good university, a large university, but the sister universities which are there in Delhi have this locational advantage. ठीक है, तो ये तो हमारी प्रॉब्लम्स हुई. अब इन प्रॉब्लम्स को एलुमनाई कैसे सॉल्व कर देंगे, करने में मदद करेंगे. इफेक्ट इसका ये होता है इन प्रॉब्लम्स का, द कंपनीज बिकम अनइंटरेस्टेड इन आवर स्टूडेंट्स. कंपनी को अगर दिल्ली में स्टूडेंट मिल जाएंगे, दे मे नॉट केयर टू कम टू अलीगढ़. We receive undervalued ratings and rankings. Many good students may opt for other colleges which are geographically well placed, better placed. You know, so alumni how can they help? Alumni are the international ambassadors of their universities. They take the knowledge of institute to their hometowns and countries and into their professional and social networks. आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी एडवर्टिजमेंट्स जो हैं वो ऑटो रिक्शा के पीछे, टैक्सी के पीछे लगे होते हैं. क्यों? बिकॉज दे आर द मूविंग एडवर्टिजमेंट्स. आप कोई होर्डिंग लगाएंगे वो एक ही जगह रहेगी. Whosoever comes there will only be able to see that hoarding. But if it is at the back of a taxi or an auto rickshaw, it will keep moving and your advertisement will also keep moving in all the different areas. So alumni are that moving advertisement. They are the international ambassadors of their universities. They take the knowledge of the institute to their hometowns and countries and into their professional and social networks. सब जगह
वो अपनी आपकी बात पहुंचा सकते हैं। अपने नेटिव प्लेस में जाके कह सकते हैं भाई हम वहाँ के पढ़े, अपने बच्चों को वहाँ पढ़ने भेजो, है ना। जो उनका प्रोफेशनल या सोशल नेटवर्क है अपनी इंडस्ट्री में बता सकते हैं कि आई एम फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी, व्हाई डोंट यू रिक्रूट फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी, डू द कैंपस प्लेसमेंट देयर। सोशल नेटवर्क्स में बात कर सकते हैं कि भाई अपने अपने बच्चों को आप वहाँ पढ़ने भेजिए। Alumni can use their position and stature in building the reputation of the college and university. अब कोई मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया तो अब वो सिर्फ अकेले नहीं हुआ है, उसके साथ जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का टैग लगा हुआ है या अल्मा मेटर का टैग लगा हुआ है वो भी ऊपर हुआ कि भाई ही इज फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी और शी इज फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी। They generate invaluable word of mouth marketing among the social and professional networks, है ना। कोई बात निकली, अगर कोई बड़ा आदमी दो चार लफ्ज भी कह देगा तो उससे उसकी काफी वैल्यू हो जाती है। Alumni can bring more companies for recruitment by convincing them through their positions, है ना। बहुत सी कंपनीज जो नहीं आना चाह रही हैं, अगर वहां पे हमारे alumni अच्छी पोजीशन पर हैं, they can always talk to the HR कि नहीं, you go to our university, recruit students from there, you'll get good students. See, I am there, I have been employed from the campus, so why don't you go and find out and get the new set of students from there. दूसरा काम alumni क्या कर सकते हैं, they can help us in research. जैसे अभी बताया था उस college development wheel में, they can help us in research. The quantity and quality of research, both, that can be increased by aiding the institute with the state-of-the-art modern lab equipment. वो डोनेट कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ हुआ, हमारे एक एलुमनस हैं 1987 बैच के, ताहिर मद्रास वाला। He has a company, a 500 strong company in the Silicon Valley, Open Silicon के नाम से। उन्होंने कहा we want to set up a VLSI design center at the Aligarh Muslim University. We said you're welcome. उनका आइडिया ये था कि जो हमारे रिटायर्ड वर्क स्टेशन हैं वो भी अगर हम आपको दे देंगे, दैट इवन बी गुड एनफ फॉर यू। जैसे अब आईफोन 15 आ गया तो आईफोन 14 बेकार थोड़ी हो गया, बहुत से लोगों के लिए आईफोन 14 भी बड़ी अच्छी चीज है। तो इसी तरह, और लेटेस्ट, वो लोग तो इंडस्ट्री में लेटेस्ट उनके पास वर्क स्टेशन हैं, कंप्यूटर्स हैं, तो जो पिछली जनरेशन थी वो उन्होंने हमको दे दी, हमारे स्टूडेंट्स के लिए वही बड़ी अच्छी है। फिर उन्होंने बात की सॉफ्टवेयर कंपनीज से कि see, we are buying software from you worth millions of dollars every year. Why don't you give the academic pricing to the institution that I am referring to? तो उन्होंने हमको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स सस्ते पैसों में दिलवा दिए। So they can help us in setting up state-of-the-art modern lab. Alumni can contribute by sponsoring the research work of students. A positive environment can thus be created. वो खुद मदद कर सकते हैं, कुछ कंपोनेंट्स चाहिए, कुछ सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाने के लिए कुछ पैसा चाहिए, सो दे कैन स्पॉन्सर। It will also help in building the reputation of the college, because more the research output, better is the reputation of any institution. The students can be assisted in their research work by technical assistance from esteemed personalities having good experience in research work. बहुत सारे alumni they can be co-supervisors, या co-supervisor नहीं भी हैं तो कोई इंडस्ट्री की प्रॉब्लम हमारे बच्चों को दे सकते हैं काम करने के लिए, या लेटेस्ट प्रॉब्लम से हमारे बच्चों को बता सकते हैं कि दिस इज द रिसर्च दैट यू कैन फर्दर टेक अप, है ना। तो दे कैन हेल्प अस इन कैरिंग आउट रिसर्च इन सो मेनी वेज। तीसरा, हेल्पिंग इन कोलैबोरेशन। देखिए कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। Just I would like to remind you of the maths problem that we used to solve when we were young. कि दो आदमी ये काम 5 दिन में करते हैं तो 4 आदमी ये काम कितने दिन में करेंगे। That is the first lesson in collaboration. The moment we learn to collaborate, we can do wonders. देखिए पूरे एरियाज हैं कंप्यूटर साइंस में, एंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन, पूरी एल्गोरिथम लोगों ने बनाई है, स्वॉर्म इंटेलिजेंस, छोटी छोटी क्रिएचर्स हैं, एंड्स हैं, स्वॉर्म्स, बीज हैं, ग्रुप विजडम उनका, वो कितने बड़े बड़े काम कर लेता है। So collaboration is very important. In fact, you might find on YouTube one of my lectures on collaboration, forming and sustaining collaborations. तो आप में से जो इंटरेस्टेड हो उसको देखिएगा YouTube के ऊपर। बाकी
आप देखिए, नंबर ऑफ कंपनीज कैरी ऑन देयर रिसर्च वर्क इन कोलैबोरेशन विद द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। देखिए, इंडस्ट्री का विन विन सिचुएशन है कोलैबोरेशन में। इंडस्ट्रीज के लिए उनको बहुत कम कॉस्ट पर उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। वी हैव 60 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, we can put all those 60 students to work for a company. In return, the students may not be charging much money, बल्कि उनको पैसा नहीं भी दिया जाए, सिर्फ सर्टिफिकेट मिल जाए कि उस इंडस्ट्री के लिए उन्होंने काम किया, that itself will suffice। और थोड़ा बहुत आपने पैसा दे दिया तो they'll be so happy। आप 60 एम्प्लॉइज रख रहे होंगे तो आप कितना पैसा दे रहे होंगे, है ना? या चलिए 60 भी नहीं रखे आपने, 10 एम्प्लॉय 5 एम्प्लॉय रखे, उनको भी उससे कहीं ज्यादा पैसा देना पड़ जाएगा जितना कि काम वो 60 स्टूडेंट्स कर देंगे आपके लिए। Alumni can use their position to have such collaborated work done with the students and faculties of the university। वही बात है, bridging the gap between institute and industry। यहाँ पे इंडस्ट्री है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, एक ह्यूज गैप है। Alumni can bridge this gap, है ना? Alumni can bridge this gap because on one side they are the product of a university, on the other side they are working in an industry right now। They are often in the position to engage the expertise of the institution in their professional lives। यहाँ पर faculty members हैं, PhDs हैं, अच्छे highly qualified लोग हैं। They can be utilized and employed to work for the industry problem। Alumni can help in signing of the MOUs between university and other institutes। बहुत से alumni दूसरी जगह faculty हैं तो वो हमारी यूनिवर्सिटी से MOU साइन करने में हेल्प करेंगे। कोलैबोरेशन, सी कोलैबोरेशन कंप्राइजेस ऑफ 3 थिंग्स। या तो कोई जॉइंट प्रोजेक्ट करें, या जॉइंट पब्लिकेशन हो, या जॉइंट सुपरविजन। ये 3 चीज मेनली कोलैबोरेशन होती हैं। जॉइंट प्रोजेक्ट पे काम करें, या जॉइंट सुपरविजन करें, या आप जो है वो जॉइंट पब्लिकेशन करें, है ना? तो alumni can help us in forming and sustaining those collaborations। चौथी चीज, sharing their experience। देखिए, एक्सपीरियंस ऐसी चीज है जो किसी किताब से नहीं मिल सकता, किसी बुक से नहीं मिल सकता। That has to be earned the hard way, and the alumni, they have undergone that hardship to gain that valuable experience। So students can learn a lot from the experience and guidance of the alumni। Their deeper knowledge about the requirement of industries can definitely help students while choosing their research and project work। क्या state of the art problems हैं, they can apprise our students with that। A guideline about what to do and what not to do। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। what to do तो हम बता देते हैं, what not to do हम नहीं बताते हैं। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, what not to do। There is this famous English cricketer, Alex Stewart। He writes in his autobiography that I learned more from my defeats than from my victories। Very true। When you are victorious, you are overjoyed। You tend to overlook the shortcomings because you have won anyway। It is when you are defeated that you sit down with your heads bowed down, introspecting, where have I gone wrong, improving upon that, and then coming out as a better person in order to win the next time। So what not to do is very important। It is always sensible to see others stumbling and be careful rather than stumbling ourselves। ठोकर लग गई, गिर गए, हड्डी टूट गई, छिल गया, दांत टूट गए, तब समझ में आई बात। इससे अच्छा भाई दूसरों को देख के समझ लो। तो दोनों बातें बतानी होती हैं alumni को, what to do and what not to do। Their experience can teach them a lot about how to achieve their goal with less difficulty। Again, this less difficulty, efficiency कैसे ले आए, गोल भी अचीव हो जाए और लेस डिफिकल्टी से अचीव हो जाए, ताकि आपकी एनर्जी सेव रहे। Those energies can be utilized elsewhere। So for all those purposes, the experience sharing with the alumni is very important। फिर 5वीं चीज मेंटरिंग है। मेंटरिंग में हमारे alumni हमारी हेल्प कर सकते हैं। देखिए, मेंटरिंग का सेटअप बिल्कुल ऐसा है जैसा घर पे सेटअप होता है। पेरेंट्स हैं और यंगर चिल्ड्रन हैं।
अब बीच में जो एल्डर सिबलिंग्स हैं, दे बिकम अ ब्रिज बिटवीन द पेरेंट्स एंड द यंगर सिबलिंग्स. Younger siblings may not be able to say many things to the parents, but the elder siblings might help. बिल्कुल इसी तरह जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन है ऑन वन एक्सट्रीम एंड द स्टूडेंट्स ऑन द अदर एक्सट्रीम, है ना. यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है और ये स्टूडेंट्स हैं. अब या टीचर्स कह लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन या टीचर्स कह लीजिए, देयर हैज टू बी अ गैप नेसेसरली. गैप होना जरूरी है टीचर स्टूडेंट्स के बीच में. नहीं होगा तो स्टूडेंट्स विल स्टार्ट टेकिंग अनड्यू एडवांटेज. मैडम इंपॉर्टेंट क्या है बता दीजिए, सर एग्जाम में क्या पूछ रहे हैं. सो दे विल ट्राई टू टेक अनड्यू एडवांटेज. तो गैप मेंटेन करना भी जरूरी होती है. और जब गैप हो जाता है तो फिर उसके बाद हाउ कैन यू गेट क्लोज टू स्टूडेंट्स. तो एक बड़ी ट्रिकी सी प्रॉब्लम है ये. तो इसको ब्रिज करने के लिए आपको मेंटरिंग सिस्टम चाहिए, और मेंटरिंग सिस्टम में द एलुमनाई कैन प्ले देयर रोल. दे आर लाइक द एल्डर सिबलिंग्स. एक तरफ स्टूडेंट्स उनसे ओपन अप हो सकते हैं. द स्टूडेंट्स कैन फ्रीली डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स विद द एलुमनाई, एंड एलुमनाई समझेंगे भी उसको क्योंकि वो स्टूडेंट रहे हैं. दे हैव अंडरगॉन थ्रू दोज प्रॉब्लम्स. और फिर एलुमनाई कैन कम हार्ड ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड टीचर्स. देखिए ये जेन्युइन प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की, और इसको आप हेल्प कीजिए. स्टूडेंट्स की इस प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कीजिए. तो ये एक मेंटरिंग सिस्टम, establishment of a student alumni mentoring program can be one of the most effective roles of alumni. All top universities of the world have an excellent mentoring network, right? It will lead to perfect utilization of alumni's skills, experience and expertise. लेकिन इस सब को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है. देखिए होगा क्या, एक फैकल्टी मेंबर, सीनियर फैकल्टी मेंबर हो जो पूरे प्रोसेस को देखे. फिर उसके बाद आपके पास एक मिड लेवल फैकल्टी मेंबर्स का ग्रुप हो, और फिर उसके बाद यंगर फैकल्टी मेंबर्स का ग्रुप हो, और फिर आपके सारे स्टूडेंट्स हों, है ना, इस तरह से. तो आप एक एक ग्रुप को एक एक ग्रुप ऑफ फैकल्टी के साथ कंबाइन कीजिए. फैकल्टी वाला जो लेवल है वो कांस्टेंट रहेगा because they are the employees, they have to do mentoring. alumni का जो ग्रुप है वो डायनामिक रहेगा. कभी कोई alumni अवेलेबल होगा, कोई नहीं अवेलेबल होगा. कभी कोई अवेलेबल होगा, कहीं कोई अवेलेबल नहीं होगा. तो जैसे जैसे उनकी अवेलेबिलिटी हो, दे कैन कीप कमिंग एंड गोइंग, है ना. तो बीच बीच में alumni का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है इन द मेंटरिंग नेटवर्क. तो 5 चीजें हो गई, है ना. छठी चीज फाइनेंशियल असिस्टेंस. Obviously everything runs on money. So alumni are the most likely group to support as they have a sense of gratitude and want their institute to climb the ladders of success. So definitely alumni will come forth with the financial assistance. One of the major hindrances in meeting the requirements of a top class institution like AMU is its low budget allocation. Budget allocation है, लेकिन जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और जितना एम्बिशियस हम हैं उतना बजट हमको नहीं मिल पाता है. This not only affects the infrastructure but also research and laboratory work of the college or the university. So collective efforts from the alumni can meet this challenge in a very effective way. जितना हमारी शॉर्टेज ऑफ बजट है, देखिए जो बेयर मिनिमम है टू कीप अस रनिंग एंड किकिंग एंड मेंटेनिंग, वो तो गवर्नमेंट से मिल जाए. बाकी जितने हमारे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए alumni कैन फिल इन. अभी तो लेटली गवर्नमेंट ने कह दिया नो इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग. आप हीफा में जाइए, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी, विच इज काइंड ऑफ अ लोन दैट यू हैव टू टेक फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड पे बैक ओवर 10 years. ठीक. तो alumni can come forward and help us in either paying back that loan or in making us self-sufficient not to take that loan from the government at all. There are a number of ways in which financial assistance can be provided. Some of them are building infrastructure. अब हमारे एक alumnus हैं Frank Islam, Dr. Frank Islam, US based. He himself
developed the entire management institute for us, worth around 20 crores. उन्होंने पूरा मैनेजमेंट के लिए पूरी एक बिल्डिंग बनाकर दे दी, Debbie and Frank Islam Management Institute. So the funds available to the institutions are not enough to meet the requirements of modern infrastructure. The institute lacks modern updated labs, smart classrooms and modern teaching tools. In सब में alumni हमारी help कर सकते हैं. With the help of alumni, these requirements can be met up to a great extent. तो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर आपके लैब्स आ गई, स्मार्ट क्लासरूम्स आ गए, टीचिंग एड्स आ गई, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. Alumni can help by taking lead in infrastructure development of a particular field. For example, recently the Alumni Association of North America donated smart classrooms to the college. But more such efforts are, however, needed. उन्होंने कुछ provide किया, लेकिन और चाहिए. We want to make every classroom as a smart classroom. Moreover, alumni can negotiate with third-party suppliers about cost and equipment. ये बहुत important factor है. जैसे मैंने अभी बताया उसमें VLSI डिजाइन सेंटर के केस में कि they can always assert on the software companies and equipment making companies कि भाई हम आपसे हर साल millions of dollars के डील करते हैं, आप कुछ फ्री इक्विपमेंट हमारी यूनिवर्सिटी को दीजिए या सॉफ्टवेयर एट द एकेडमिक प्राइसिंग हमारी यूनिवर्सिटी को एक्सटेंड कीजिए. So that is how they can get us those discounts. फिर फंड रेजिंग में हमारी मदद कर सकते हैं. They are the brand ambassadors of their institution. They can organize various fund raising programs for the institute and university. और ऐसा करते हैं लोग, फंड रेजिंग करते हैं और जो भी फंड रेजिंग में the money they raise, they give us for a specific purpose. They can also help by spotting and searching for people who can support the institution and help in maintaining good long-term relation with eminent business personalities. खुद कितनी कर सकते हैं मदद वो करेंगे, बाकी जो और philanthropist हैं they can get us in touch with them. वो help करना ही चाह रहे हैं, so why not take their help to the academic institution, you know? So the alumni can play a key role there too. अब ये pandemic में our alumni they could raise around 1.73 crores in just a matter of 2 months for the oxygen plant, for other health aids. 1.73 crores Indian rupees they raised in just a matter of 2 months, and they donated the same to the university. Oxygen plant लग गया हमारे यहाँ, बहुत सारे health equipment आ गए. Third way of doing the financial help is research and projects. Alumni can help in funding ongoing research projects in the institute and by using their influence to negotiate with the third party supplier. जो अभी बताया मैंने आपको, खुद फंडिंग कर सकते हैं और negotiation with the third party supplier. Alumni can play an influential role in helping the faculty and students back good research projects associated with the industries. स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट्स पे काम हमारे बच्चे कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द alumni. Arranging the scholarship for needy students. Alumni can help students who can't pursue their goals only because of financial limitation. कोई अच्छा कोर्स बच्चा करना चाह रहा है, वो सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में, alumni can come forth and help them. There are a number of students who come from very poor background and they lack financial assistance to meet their daily requirement. A number of highly talented students don't go for costly courses only because of financial inability or difficulty. So इस सब में we can provide scholarship to our students to pursue their research, their career goals. चलिए अब interacting with the students, financial aid के बाद interacting with the students. Alumni can take out some time from their work and interact with the students to understand their needs and give remarks. Alumni are great role models for current students and are often well placed to offer practical support to students as they start their careers. देखिए मैं तो ये कहता हूं कि alumni आएं, कुछ नहीं बोलें, they just stand in front of our students. That itself will be a motivation to our students. कि भाई इन्हीं बेंचेस पे, इसी लाइब्रेरी में, इसी हॉस्टल में रहते हुए ये लोग आज मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आज बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, तो हम भी बन सकते हैं. They will develop that self belief in them.
कि वी कैन ऑल्सो डू द सेम। अच्छा, फिर अब जाहिर है आएंगे तो सिर्फ खड़े तो नहीं रहेंगे, वो कुछ इंटरैक्ट करेंगे, बोलेंगे। स्टूडेंट्स दे आर कीन ऑब्जर्वर्स, दे विल लर्न how do they respond to questions, how do they carry themselves, how do they react, how do they interact. इस सब से स्टूडेंट्स लेसन ले रहे होंगे एंड दैट विल कंट्रीब्यूट अ लॉट टू देयर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टेकिंग दोज alumni as their role models. So alumni interaction with the students can raise their morale and make them more ambitious in their work. जो एक lack of motivation है वो alumni उसको overcome कर सकते हैं by coming and interacting with the students. Promoting entrepreneurship by funding good business ideas, है ना। देखिए, मेक इन इंडिया पॉसिबल ही नहीं है अगर एलुमनाई जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप में हेल्प नहीं करेंगे। Alumni in collaboration with the institution can organize various competitions on generating business ideas. Alumni can fund the students in developing their business model prototype. They can help in meeting students with angel investors. तो पहला स्टेप आइडिया क्रिएट कराना, दूसरा स्टेप उसको फंड कर देना, और नहीं तो किसी एंजल इन्वेस्टर से उनको मिलाना ताकि उनके बिजनेस आइडियाज या जो भी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए इनिशियल स्टेज में उसकी हेल्प की जा सके। तो promoting entrepreneurship also may be taken up by the alumni. With their expertise and financial assistance, they can help or can become partners in successful business ventures. पार्टनरशिप कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स के साथ alumni कि ठीक है, if it becomes a successful business venture, we'll share the benefits. Alumni having their own business firms can help these students in setting up of their business model. We have an active entrepreneurship development cell which has performed numerous activities in the last few years, primarily with the help of alumni. जितनी काम हो रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल में वो प्राइमरीली alumni की हेल्प से हमारे यहाँ हो रहे हैं। अच्छा, अब ये सब हुआ हाउ कैन द alumni contribute। अब देखिए व्हाट आर द इश्यूज एसोसिएटेड विद alumni एंड हाउ टू सॉल्व देम। देखिए, जब alumni की बात होती है ना, यू हैव टू डील फ्रॉम एन इंडिविजुअल। हर एलुमनस, हर alumni एक इंडिविजुअल है, और फिर उनकी एसोसिएशन से डील करना जो कि उनका एक ग्रुप है, और कहीं कहीं तो फेडरेशंस बनी हुई हैं, फेडरेशंस ऑफ alumni associations. For example, in North America, we have so many associations that we had to form an umbrella organization as Federation of AMU Alumni Associations of America, FAAA, Federation of AMU Alumni Associations of America. अच्छा, अब ये फेडरेशंस है तो अम्ब्रेला बॉडी, लेकिन ना उनके पास पैसा है ना उनके पास पावर है। पावर और पैसा तो एसोसिएशंस के पास है, बट स्टिल यू हैव टू गिव रिगार्ड टू दीज फेडरेशंस इवन दो दे आर मनीलेस एंड टूथलेस। बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि पावर तो सारी प्राइम मिनिस्टर के पास है, बट द हाईएस्ट रिगार्ड इज गिवन टू द प्रेसिडेंट, क्योंकि वो ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर हैं। वी हैव टू गिव देम हाईएस्ट रिगार्ड, लेकिन ना उनके पास पैसा है ना पावर है। पावर और पैसा सारा प्राइम मिनिस्टर के पास है। So how to recognize and control the associations? There may be an association which has just a few alumni or alumni, किसी छोटे सिटी में है 10-12 सिर्फ alumni है, to a huge size associations, दिल्ली चले जाइए तो thousands of alumni and alumni are there. अब उन सब को आपको ऐसा नहीं है कि आप छोटी एसोसिएशंस को आप इग्नोर मार दें कि छोटी छोटी करके बहुत सारे नंबर बहुत ज्यादा होंगे, बड़ी कम होंगी, नंबर कम होंगे लेकिन उनका साइज बड़ा होगा। सो यू हैव टू डील विद ऑल ऑफ देम। फिर एक ट्रिकी इशू होता है जो आप लोगों के दिमाग में भी होगा, बहुत से लोग बाद में क्वेश्चन करते हैं कि अलुमनाई एसोसिएशन को रजिस्टर करें कि नहीं करें। ये एक बहुत ट्रिकी इशू है। देखिए, अगर आपने अलुमनाई एसोसिएशन को रजिस्टर नहीं किया तो बहुत सारे जो सोसाइटी एक्ट के फायदे हैं वो आप उठा नहीं पाएंगे। लेकिन a word of caution here, if you register the alumni association then it becomes holier than thou. वो समझते हैं कि हम इंस्टीट्यूशन से आगे निकल गए, we can dictate the institution now. ये हमारे साथ हुआ। हमारी AMU alumni association रजिस्टर कराने के बाद they came to us, उन्होंने कहा how dare you organize the alumni meet without our consent. हम को ऑर्गेनाइज करेंगे, हम रजिस्टर्ड बॉडी हैं, हमारे पास पावर है अलुमनाई की, आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी अलुमनाई मीट की। तो वही समझते हैं कि हम इंस्टीट्यूशन से आगे निकल गए।
तो ऐसा ना हो कि रजिस्ट्रेशन सिखाने के बाद, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो हमसे समझे कि हम और बड़े बन गए इंस्टीट्यूशन से, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो दे शुड नॉट बिकम मोर पावरफुल देन द अल्मा मेटर। तो रजिस्ट्रेशन तो कराया जाए, लेकिन उस रजिस्ट्रेशन में अपना भी स्टेक रखा जाए और उसके क्लॉज ऐसे डिजाइन किए जाएं कि वो सुपरसीड ना कर सकें अल्मा मेटर को। मल्टीपल एसोसिएशंस इन वन प्लेस, ये दूसरा इशू हो जाता है बड़ी यूनिवर्सिटीज, बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए। अब जैसे इश्यूज इन गल्फ बेस्ड एसोसिएशन, जो गल्फ में जो एसोसिएशंस हैं, असल में गल्फ में देयर इज नो इलेक्शन, वी ऑल नो देयर इज नो डेमोक्रेसी, नो इलेक्शंस देयर, सो ऑल काइंड्स ऑफ इलेक्शंस आर बैंड। आप कहीं पर कोई इलेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि कोई एक इलेक्शन करेगा तो फिर मांग होगी कि साहब गवर्नमेंट भी इलेक्ट की जाए, विच दे डोंट वांट टू डू। अच्छा, जब एसोसिएशन, जब सारे इलेक्शन बैन हो गए, तो अब एएमयू अलुमनाई एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, हाउ टू सेलेक्ट और इलेक्ट, और हाउ टू सेलेक्ट और इलेक्ट द ट्रेजरर, द सेक्रेटरी। तो अब उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग बनना चाह रहे हैं, इलेक्शन है नहीं, तो अब मल्टीपल एसोसिएशंस बन जाती हैं। हर कोई सेल्फ प्रोक्लेम्ड बना देता है कि साहब ये एसोसिएशन मेरी, मैं प्रेसिडेंट, ये सेक्रेटरी, वो ट्रेजरर। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, मेरी एसोसिएशन, आई एम प्रेसिडेंट, ही सेक्रेटरी एंड ही ट्रेजरर। इस तरह से करके 3-4 एसोसिएशंस बन गई। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 3 एसोसिएशंस हैं। अच्छा, ये सिर्फ गल्फ बेस्ड एसोसिएशंस में नहीं है, ऑफ ऑल द प्लेसेस इन द यूएसए वी हैव दिस प्रॉब्लम, जहां पर कि इलेक्शन भी बैंड नहीं है। वहां पर क्या हुआ, फॉर एग्जांपल वॉशिंगटन डीसी में एक एसोसिएशन है, बिल्कुल उससे एडजेसेंट स्टेट है मैरीलैंड। मैरीलैंड वालों ने कहा कि हम भी बनाएंगे एक एसोसिएशन। तो अब डीसी वालों ने कहा भाई रोज तो तुम काम करने मैरीलैंड से ड्राइव करके डीसी आते हो, अपने हॉलीडेज के लिए तुम डीसी आते हो, वीकेंड्स पर तुम शॉपिंग करने डीसी आते हो, तो एसोसिएशन भी एक रहने दो। वो नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं हम अपनी अलग बनाएंगे। अब हमें बनाना पड़ा रूल कि भाई एटलीस्ट 2 एसोसिएशंस देयर ऑफिसेस मस्ट बी 50 माइल्स अपार्ट। तो फिर सवाल खड़ा हुआ, साहब 50 माइल्स क्यों, 100 क्यों नहीं, 40 क्यों नहीं, 20 क्यों नहीं? तो अब ये ट्रिकी इश्यूज हैं। मल्टीपल एसोसिएशंस फॉर मोर चेयर पोजीशंस, क्या डिस्टेंस क्राइटेरिया हो? तो अब ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कहा कि साहब वी आर नॉट गोइंग टू गेट इन्वॉल्व्ड इनटू हाउ मेनी एसोसिएशंस, व्हाट इज द डिस्टेंस क्राइटेरिया एंड ऑल। आवर पोजीशन इज दैट वी रिकॉग्नाइज एज मेनी एज आर आउट देयर। यूएई में तुम 3 क्या 10 बना लो, अमेरिका में तुम 100 बना लो एसोसिएशंस, हम हर किसी को रिकॉग्निशन दे रहे हैं। हमारी जेब से क्या जा रहा है? हम तो चाहेंगे द मोर द बेटर। भाई तुम 5 बनाओगे, नॉट ऑल 5 विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग, बट एटलीस्ट 2-3 ऑफ देम विल कॉन्ट्रीब्यूट, सो द मोर द बेटर। हम ये कहते हैं, हम इस चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं तुम कैसे बना रहे हो, तुम बनाओ, और जितनी होंगी हम सबको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। In order to look after the work of the alumni for such a huge alumni, according to one estimate, we have around 2 lakh living alumni all over the world. तो अब उन सबको मैनेज करना is not easy. So an alumni affairs committee has been formed. The vice chancellor is its patron and pro vice chancellor is the co-patron. तो VC इसके patron है और PVC co-patron. एक चेयरमैन इसका होता है, एक वाइस चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स from amongst the faculty members of the university. They form the alumni affairs committee. इसके अलावा हमने एक इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी, एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी फ्रॉम अमंग्स द alumni बनाई हुई है। They are senior, active and contributing alumni and alumni. Not necessarily the association shareholders. ऐसा नहीं है कि एडवाइजरी कमेटी में हर इंटरनेशनल alumni एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को ले लिया है, कोई नो एक्स ऑफिशियो मेंबर। ये हमारा परव्यू है, हम जिसको समझ रहे हैं कि सीनियर है, एक्टिव है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको एडवाइजरी कमेटी में रखेंगे, है ना। कोई ये नहीं, भाई इलेक्शन से तो कोई भी हो सकता है प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी, या सेल्फ प्रोक्लेम्ड कोई भी हो सकता है प्रेसिडेंट सेक्रेटरी। व्हाई इंक्लूड ईच वन ऑफ देम इफ दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन द एडवाइजरी कमिटीज? तो 2 कमिटीज हमने बनाई हैं, एंड इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द वाइस चांसलर to decide about the members of these advisory committees. तो एक alumni affairs committee है और 2 advisory committees हैं, one at the national level, the other at the national level.
अब देखिए अलुमनाई अफेयर्स कमेटी का हमने रोल और चार्टर ये हमने चॉक आउट किया हुआ है. इट इज लाइक linking to my previous lecture, it is like the vision and mission. Role is like the vision and charter is like the mission. तो alumni affairs committee का भी हमने बनाया हुआ है ताकि हमारा जो पाथ है वो डिफाइंड रहे. रोल क्या है? टू एक्ट एज इफेक्टिव इंटरफेस बिटवीन द alumni and AMU so as to optimize the potential of the अलीग fraternity. अलीग मतलब जो AMU के पढ़े हुए लोग हैं उनको हम शॉर्ट में अलीग कहते हैं. द अलीग fraternity as a key stakeholder in the future growth of the alma mater. ठीक है? To act as effective interface between the alumni and AMU so as to optimize the potential of the alumni fraternity as a key stakeholder in the future growth of the alma mater. अब इस रोल के लिए हमने चार्टर, इस विजन के लिए हमने मिशन स्टेटमेंट्स. Strengthen alma mater bondage, support alumni driven initiatives, facilitate student scholarships and sponsorships, facilitate MOUs and collaborations with overseas institutions, facilitate Aligarh academic enrichment program. ये क्या है? ये मैं आगे बात करूंगा. This is one of the good initiatives that we have taken. Maintain alumni website and alumni data, monitor ongoing projects and provide timely feedback, coordinate the visits of alumni to the AMU, organize alumni meets and facilitate other alumni related programs. तो ये चार्टर है हमारा अपना रोल प्ले करने के लिए. दिस इज आवर चार्टर लाइक द विजन एंड मिशन. अब ड्यूटीज ऑफ द चेयरमैन ऑफ अलुमनाई अफेयर्स कमेटी ये भी हमने डिफाइन किया हुआ है. क्या क्या ड्यूटीज हैं चेयरमैन की? द चेयरमैन विल बी इन चार्ज ऑफ द, इसीलिए मैंने पिछले लेक्चर में बताया था डॉक्यूमेंटेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है. जो चीज हवा में होती है वो हवा में रह जाती है. इफ यू पुट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर दैट बिकम्स अ गाइडिंग डॉक्यूमेंट फॉर अस. The chairman will be in charge of the office of the Alumni Affairs Committee and look after day-to-day work of the committee. He will formulate plans for approval of the committee and perform all other activities to further strengthen the bond between the university and the alumni. He will be the convener and maintain all records related to the Alumni Affairs Committee. Right? Or perform all other functions which may be delegated to him by the vice chancellor. तो ये सारे ड्यूटीज ऑफ द चेयरमैन ऑफ, वाइस चेयरमैन की भी ड्यूटीज हैं. विल असिस्ट द चेयरमैन एंड परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एज असाइन्ड टू हिम बाय द चेयरमैन. ही विल आल्सो लुक आफ्टर द वर्क ऑफ द चेयरमैन इन हिज एब्सेंस. ये ड्यूटीज ऑफ द वाइस चेयरमैन ऑफ, just giving you an idea, not to tell you that you also keep all these things as it is. You may change according to what you want. अच्छा, फिर connecting with alumni. This is very important. If you're not connected with the alumni, how can you use them for fundraising, for research collaborations, for mentoring and all? तो अब उसके लिए हमको वर्ल्ड alumni डायरेक्टरी बनानी थी. बहुत सारे इश्यूज हमने फेस किए. सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स लोग शेयर नहीं करना चाहते थे because they were scared of getting unsolicited calls, spam emails in sensitive areas or countries. You know, कोरिया से लोगों ने कहा कि साहब हम तो ईमेल शेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमारा हर ईमेल देखा जाता है, कौन स्टूडेंट क्या हमको लिख दे. ऐसे ही कॉल्स एंड ईमेल्स फॉर पॉलिटिकल पर्पस, कॉन्टैक्ट्स एक बार शेयर हो जाएंगे. तो उनको सबको कन्विंस करना पड़ा कि नहीं भाई, आप अपने कॉन्टैक्ट्स नहीं देंगे हमें तो हम कैसे फिर, या दूसरे एलुमनाई कैसे आपसे इंटरेक्ट करेंगे. अब गैदर कैसे किया जाए एलुमनाई डेटा? गूगल फॉर्म से करें तो डेटा लीकेज के चांसेस होते हैं. भाई हमने गूगल लिंक क्रिएट किया, मिस्टर एक्स को पास किया, मिस्टर एक्स ने उसको मॉडिफाई करके मिस्टर वाई को दे दिया, तो अब डेटा वाई का हमारे पास आने के बजाय एक्स के पास चला जाएगा. तो फिर हमने MS वर्ड अटैचमेंट बनाया. अभी नेक्स्ट पेज पे मैं दिखाऊंगा आपको. टेम्पलेट बनाकर लोगों को भेजी कि इसमें फिल इन कीजिए, हमको स्ट्रक्चर्ड डेटा चाहिए, है ना. आप इसमें फिल इन करके भेजिए सो दैट वी कैन इनकॉर्पोरेट इन आवर अलुमनाई डायरेक्टरी. वेबसाइट फॉर्म्स हमने डिजाइन किए कि वेबसाइट पे आके हमारी आप डेटा फिल इन कर दीजिए. तो ये हमारा टेम्पलेट है. ईमेल तो हमने की रखा कि भाई ईमेल तो देना ही है. इनरोलमेंट नंबर जो उनका यूनिक आईडी है यूनिवर्सिटी का,
पोजीशन क्या है, नेम, जेंडर, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन फ्रॉम AMU, लास्ट हॉल अटेंडेड, which faculty did you study in, year of joining AMU, year of leaving AMU, current country, current city, current designation, current company or firm, institution or permanent address. मोबाइल नंबर हमने ऑप्शनल कर दिया, भाई जो देना चाहे दे, जो नहीं देना चाहे नहीं दे। बहुत से लोगों ने रेडिली दिया अपना मोबाइल नंबर बिकॉज दे वर कीन टू हेल्प द स्टूडेंट्स, करंट क्रॉप ऑफ स्टूडेंट। बहुत से लोगों ने नहीं देना चाहा, ठीक, हमने कहा चलो एटलीस्ट ईमेल विल बी देयर। तो ये फील्ड्स हमारी थी उसमें MS वर्ड के टेम्पलेट पे भी और गूगल फॉर्म में भी या वेबसाइट फॉर्म्स में भी हमने ये फील्ड्स उनसे ली। और ये हमने 2020 में, 2020 happened to be our centenary year. We became a university in 1920. So we completed 100 years as a university in 2020. तो centenary celebrations पे हमने ये alumni directory अपनी जो है वो रिलीज की, which contains around 12,000 plus contacts. बहुत से लोगों ने नहीं दिए contacts, बहुत से लोग हमारे contact में नहीं आ सके। जैसे मैंने अभी कहा around 2 lakh living alumni must be there. So this is just the version 1.0, just a humble beginning towards compiling the alumni database. कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं alumni कनेक्शन के लिए, जैसे हमारा ही एक amudirectory.com, one of our alumni had developed this. बड़ी आसानियां थी इससे, आप क्लास वाइज सर्च कर सकते थे। बीटेक ऑफ 1992 तो सारी लिस्ट आ जाती थी कौन कौन है। हॉल ऑफ रेजिडेंस वाइज की सुलेमान हॉल में कौन कौन रहा है, पूरी लिस्ट आ गई। लोकेशन वाइज, करंट लोकेशन, नेटिव प्लेस है ना, लखनऊ के कौन कौन रहने वाले हैं, या इस वक्त डैलस में कौन कौन काम कर रहा है। सो दैट वे वी वर एबल टू मेक अ गुड सर्च ऑफ द alumni. But the underlying, the technology of this amudirectory.com, that became obsolete. So it had to pull down. कुछ कॉमर्शियल वंस भी हैं, जैसे अल्मा शाइन्स का बहुत ईमेल आता रहता है, वो हेल्प करते हैं alumni कनेक्ट का फ्रेमवर्क बनाने के लिए। कनेक्शन तो आपको गैदर करने पड़ेंगे, हाउ टू मेंटेन इट, दे प्रोवाइड द फ्रेमवर्क। हमने एक टेलर मेड बनवाई aliconnect.com, है ना, तो उसकी वेबसाइट भी है और iOS और एंड्रॉइड ऐप्स भी हैं, जिसके थ्रू alumni में रिमेन कनेक्टेड टू ईच अदर। तो YouTube पर एक प्रमोशनल वीडियो पड़ा है अली कनेक्ट का, आप लोग देखना चाहें तो वहाँ देख सकते हैं कैसे alumni टू alumni कनेक्शन, स्टूडेंट टू alumni, फैकल्टी टू alumni, है ना। फिर उसके बाद entrepreneur alumni टू entrepreneur alumni, इंडस्ट्रियलिस्ट alumni टू इंडस्ट्रियलिस्ट alumni, इस तरह से करके बहुत सारे हमारे डिस्कशन फोरम्स, एक पूरा ऑनलाइन सोशल नेटवर्क हमने aliconnect.com में बनाया। फिर एक इशू होता है alumni मीट्स का। ट्रिकी सिचुएशन ये होती है, हमारे यहाँ फाउंडर्स डे सेलिब्रेशन होता है अक्टूबर 17 में, तो बहुत से alumni ये चाहते हैं कि alumni मीट इससे एडजेसेंट हो, so that when they are on the campus they may participate in the founders day celebration as well as the alumni meet. फाउंडर्स डे सेलिब्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सर सैयद डे डिनर, द डिनर ऑन अक्टूबर 17. So more than the food that we have there, it is the gathering that matters. बहुत से लोग कहते हैं साहब डिनर खाकर हम चले जाएंगे और क्या, is that all? हम कहते हैं no, that's not all, but at least keep holding those dinners. भाई एक डिनर, 2 डिनर, 3 डिनर, उसके बाद तो हम बैठेंगे ना, सोचेंगे कुछ करना चाहिए, कभी ना कभी तो ख्याल आएगा कि भाई सर सैयद के नाम पर डिनर खा रहे हैं, so we should do also something for the cause of education, है ना। तो अब ये alumni मीट एडजेसेंट टू अक्टूबर 17 हो या स्पेस्ड हो, एडजेसेंट करने में प्रॉब्लम क्या है कि there will be a huge load on our guest houses. The guests for the founders day and the guests, all the alumni coming as guests, that will be a huge burden on the guest houses. तो फिर ये सोचते हैं कि इसको अलग अलग रखें, 2 different, all together different celebrations, है ना। उसमें एक ये भी होता है कि बहुत से लोग अपने अपनी प्लेसेस पर अक्टूबर 17 फाउंडर्स डे बनाना चाहते हैं, वो यहाँ आ जाएं तो वहाँ पे फिर वो उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाए, फंड रेजिंग नहीं कर पाए, तो ये एक ट्रिकी इशू रहता है। वी ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी लेवल alumni मीट once every year. In addition to that, faculty or department level alumni meets are organized at the time of conferences. ये बहुत अच्छा मौका होता है
कोई डिपार्टमेंट को कॉन्फ्रेंस कर रहा है, लास्ट डे कुड बी द alumni meet, because all the students or many of the students of that department will be coming for the conference, so they may stay for one more day for the alumni meet. फिर जुबलीज होती हैं, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, है ना, और बीच बीच में भी 40 इयर्स पे भी आना चाहते हैं, 30 इयर्स पे भी आना चाहते हैं, सो वी वेलकम देम कि आइए अपनी सिल्वर जुबली कीजिए। अब जैसे अलुमनाई मीट 2018 में जो हुई थी, उसमें एक इनॉग्रल सेशन हमने किया सुबह, फॉर्मल इनॉग्रल सेशन। इन द आफ्टरनून वी सेंड द alumni to their respective faculty, where the presentation on the progress of the faculty was given by the dean, interaction with the students happened, interaction with senior and retired teachers, discussions on the interesting anecdotes from their times, और साथ में हमने सिलेबस रिवीजन भी करवा लिया, फीडबैक कलेक्शन कर लिया, फ्यूचर प्लान्स एंड रोल ऑफ एलुमनाई डिस्कस कर लिया। तो ये सारा बहुत प्रोडक्टिव काम, और सब हर फैकल्टी को कहा कि इसको मिनट करो, डॉक्यूमेंट करो, है ना। So that is how we organized the alumni meet in 2018. 2019 में the theme was roadmap to centenary celebrations. 18-19 में किसी वजह से डिस्कस कर रहा हूँ। ये क्या है कि 2019 में हमने कॉन्क्लेव मीट नहीं बनाई, कॉन्क्लेव बनाया। फर्क ये रहा कि alumni meet में everybody was welcome, everybody had to register and they can come. बहुत से लोगों ने कहा रजिस्ट्रेशन क्यों रख रहे हैं, alumni को आने दीजिए। So we said no, we want only the sincere alumni to come. अगर आप कोई फीस नहीं रखेंगे रजिस्ट्रेशन से, तो अलीगढ़ के अलीगढ़ में 10,000 लोग खड़े हो जाएंगे कि हम आना चाहते हैं। तो हमने एक नॉमिनल फीस रखी, 2,500 if you are coming alone and 5,000 if you are coming with your family, ताकि जो सिंसियर alumni है, सीरियस alumni, they only can come. कॉन्क्लेव में हमने कोई फीस नहीं रखी, because we were inviting 2 office bearers from each of the alumni associations from across the world, और थीम हमारा था रोड मैप टू सेंटेनरी सेलिब्रेशंस, कि 2020 में हमारा सेंटेनरी सेलिब्रेशंस कैसे बिफिटिंग हो 100 years of the university, उसके लिए हम उनके ओपिनियन गैदर करना चाह रहे थे। So participation was only by invitation, there was no registration fees, we provided the local hospitality, but the travel expenses were borne by the concerned person or association. तो ये 2018-2019 का अलग अलग अप्रोच रही। अब ये देखिए जैसे 2015, अच्छा अलुमनाई मीट में हम क्या करते हैं, हमारे चीफ गेस्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर, एवरीबॉडी हैपेंस टू बी एन alumnus who rose to a high level, है ना। देखिए जैसे 2015 में डॉक्टर अशोक सेठ बैठे हैं, द फेमस कार्डियोलॉजिस्ट, ही इज आवर प्रोडक्ट। नसीरुद्दीन शाह, ही इज आवर प्रोडक्ट, है ना। इस तरह से करके हमारे सब सीनियर लोग, वाइस चांसलर इज स्पीकिंग, देन वाइस चांसलर इज स्पीकिंग। ये भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अमीर अहमद। प्रोफेसर सुहेल साबिर वाज द चेयरमैन ऑफ एलुमनाई अफेयर्स कमिटी देन। तो इस तरह से हमने सीनियर लोगों को बुलाया। ये भी हमारे कुछ, ये प्रो वाइस चांसलर हैं उस वक्त के, ये चांसलर थे, वो भी हमारे alumnus थे, राइट। ये 2015 फुल हाउस पूरा हमारा जो कैनेडी हॉल है, 1300 सीटर, ऑल द alumni कमिंग फ्रॉम ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर ये alumni मीट 2016 है, ये alumni मीट 2017 है, फिर ये 2018 है, when I took over as the chairman of Alumni Affairs Committee, the first alumni meet that I organized. Again, you can see all the senior alumni coming, and they were made the chief guest and the guest of honor. फिर ये alumni conclave है 2019, which I just talked about. Dr. Abdullah, he came all the way from Washington DC to attend this on his own. फिर ये सिल्वर जुबली, हमारे अपने बैच की सिल्वर जुबली 1992 में हम लोगों ने ग्रेजुएट किया था। तो 25 years we got together in the engineering college and all our classmates were there. So I'm sitting there not just as their class fellow, but also as the principal of the college. So it was such a proud moment for all my classmates that I am the principal of the same college they've studied in. And something very interesting happened in the inaugural session. One of my classmates who was conducting,
He addressed the Vice Chancellor, Honorable Vice Chancellor. He addressed the Dean, distinguished Dean. But when it came to addressing the turn of addressing the principal, so he said, "Hamara apna Sufyan." So everybody was so overjoyed, the principal from their own batch. अब बात करें कुछ major contributions of alumni की. A residential hall for NRI students that is coming up with the help of the alumni. A building for the faculty of management worth about 20 crores. Dr. Frank Islam, I just now told you. In addition, an auditorium for the Department of Mass Communication also given by Dr. Frank Islam worth about 1 crore. Several smart classrooms, rupees 1.73 crores for the oxygen plant and other essential medical equipment. A house has been donated for the innovation cell, their paternal house. We have Adil Chauhan, Tariq Chauhan. They are big industrialists in the Gulf. उन्होंने अपना पूरा जो घर था पैटर्नल हाउस वो डोनेट कर दिया, and university has set up the innovation cell there. The alumni can help us in the placement and internship of the students. अब good practices दूसरे institutions में क्या है? IIT Kanpur, I am an alumnus of. They keep sending emails. They find out missing emails from classmates. मेरे पास मेल आता है कि आपके फलाने क्लासमेट थे. If you are in touch, please share his or her email address so that we can also get in touch with them. तो इस तरह से वो पूरा डेटा कलेक्ट करते रहते हैं. IIT Delhi issues an I-card to every alumni. Can be used for their library, sports facilities. They have issued a lifelong email address, mmmsbig@alumni.iitd.ac.in. ये अब हमेशा के लिए रहेगा हमारे पास. University of California at Berkeley, where I had been a postdoctoral fellow, they support my email address with them even today. उनका जो email उन्होंने मुझको allot किया था वो अभी भी active है. It has been like how many, almost 19 years that I left them. Their I-card continues to be valid for the campus bus. अभी भी वो उनका I-card उस वक्त का मैं ले जाता हूँ तो campus bus जो कि $2 की होती है, but I can ride the campus bus free by flashing that I-card. ऐसी बर्कली टावर है जिससे पूरा सिलिकॉन वैली दिखती है. दे हैव द लिफ्ट अरेंजमेंट, उसमें भी वो लोग $2 चार्ज करते हैं फॉर विजिटर्स, बट इफ आई हैव द आई कार्ड दे कैन लेट मी गो फ्री ऑन द बर्कली टावर. तो छोटी छोटी चीजें हैं, बट दीज स्मॉल थिंग्स दे कीप द एलुमनाई ग्लूड टू द अल्मा मेटर. अब ये देखिए जो IIT दिल्ली ने मुझको ईमेल भेजा था कि yourname@alumni.iit.ac.in, और 50,000 एलुमनाई हैं उनके IIT दिल्ली के, उन सबको उन्होंने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है. ऐसी फ्रॉम IIT कानपुर आई रिसीव द बर्थडे विशेस फ्रॉम द वेरी डेस्क ऑफ द डायरेक्टर. ही गिव्स दिस मे बी एन ऑटोमेटेड ईमेल, बट it gives me a sense of pride that I must hold in being the graduate of IIT Kanpur. अच्छा, फिर उसके बाद alumni feedback. सबसे पहली बात तो for correction, self correction, self introspection. alumni से feedback लीजिए, fair feedback देंगे वो. This may be used for improvement, and this feedback is also required for ABET, NAC, NBA, etc. The previous day I talked about it. NBA में कैसे alumni feedback की जरूरत पड़ती है. For outcome based education, we need senior alumni for PEOs and all alumni for POs. है ना, वो pyramid हमने डिस्कस किया था ना, विजन, मिशन, फिर PEO और PO. तो इन दोनों के लिए हमको alumni feedback चाहिए. ये CEOs हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स का फीडबैक लेते हैं. तो इन दोनों जगह पर हमको alumni के फीडबैक की जरूरत पड़ती है. एंड दिस फिगर विल रिमाइंड यू, ये फिगर हमने उस दिन डिटेल्स में डिस्कस की थी. तो देखिए, फॉर द इनडायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ PO इवैल्यूएशन यू रिक्वायर alumni सर्वे. फॉर द इनडायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ द PEO इवैल्यूएशन यू रिक्वायर द alumni सर्वे. यहाँ पर सीनियर alumni होंगे who may have graduated at least 5 years earlier, और यहाँ पे all alumni. तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंपोनेंट दोनों का दैट कम्स फ्रॉम द alumni. सो फीडबैक ऑफ alumni इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर एक हमने प्रोग्राम शुरू किया चिल्ड्रन ऑफ alumni बॉन्डिंग प्रोग्राम.
The alumni, they have the emotional connect lifelong, but we need their children also to be attached. Alumni are better off than their parents. Their children can afford to study at better places or abroad. Alumni तो अपने बच्चों को कहीं और पढ़ने भेज रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में भेज रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं उनके वो बच्चे भी हमसे अटैच रहें. So they want to change for wider exposure, for language proficiency, cultural heritage, community work. इस सब के लिए हमने उन चिल्ड्रन को अपने यहाँ इनवाइट किया और हमने एक स्टार्ट किया कशिश प्रोग्राम. कशिश मीन्स अट्रैक्शन, which is flexible in duration, timing and curriculum. No credit as such, no tuition fees, only the boarding lodging charges. And we provide sports and cultural activities, residential life, library, labs and classes. We assign mentors and we issue certificates at the end of it. ये इसका हैंड आउट है कशिश का, बॉन्डिंग प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन ऑफ एलुमनाई, है ना. तो जब कभी पेरेंट्स चाहें वो अपने चिल्ड्रन को लेकर हमारे पास आए. 1 to 8 week course in faculty of relevant subject. इसमें सर सैयद मिशन अवेयरनेस, रेजिडेंशियल लाइफ इन AMU हॉल, उर्दू प्रोफिशिएंसी क्लासेस, लिटरेचर एंड कल्चरल एक्टिविटीज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, वॉलंटियर फॉर कम्युनिटी वर्क. इसमें हम एक्सेस देते हैं उनको ड्रामा, डिबेट, बैतबाजी, मुशायरा, फिल्म क्लब, लिटरेरी फेस्टिवल, इको क्लब. वी हैव अ 125-year-old राइडिंग क्लब. हमारे बच्चे जाते हैं नेशनल इक्वेस्टेरियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं, तो द चिल्ड्रन कैन कम एंड एंजॉय द राइडिंग विद अस. स्विमिंग, हॉल वीक, रोबो क्लब है हमारा, इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, सर्विस एंड अडॉप्टेड विलेजेस है, अर्बन एंड रूरल हेल्थ एरियाज, ट्री प्लांटेशन एंड लॉट मोर एक्टिविटीज. क्योंकि फ्लेक्सिबल है तो उनके हिसाब से हम डिजाइन कर सकते हैं, मेंटर असाइन कर देंगे, सर्टिफिकेट इशू कर देंगे. फिर A League Academic Enrichment Program. It was started by Canada alumnus as the summer university at no cost to the university. वो खुद आते थे, खुद आकर ठहरते थे, 2 महीने हमारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते थे समर्स में. So we extended it. We said whenever an alumnus is coming home, alumnus or alumni is coming home, they can have the interaction with the students. किसी सब्जेक्ट पर और just for the sake of motivation, counseling, career guidance और just for the exposure and experience sharing. जब भी आए हमारे बच्चों से interact करें. We have had online sessions too, particularly during the pandemic, but face to face is preferred. हम कहते हैं कि आप आइए फिजिकली ताकि बच्चे आपको ऑब्जर्व करें, है ना, आप कैसे चल रहे हैं, आप कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, यू कैरिंग योरसेल्फ. तो फेस टू फेस इज प्रिफर्ड. दैट इज A League Academic Enrichment Program. फिर एलुमनाई गेस्ट हाउस. जो गेस्ट हाउसेज यूनिवर्सिटी के हैं, दे हैव अ प्रायोरिटी फॉर कॉन्फ्रेंस डेलीगेट्स, ऑफिशियल गेस्ट्स और यूनिवर्सिटी एंगेजमेंट्स. सो एलुमनाई आर नॉट एबल टू फाइंड अकोमोडेशन एट देयर कन्वीनियंस. तो हमने उनसे कहा कि बिल्ड एन एलुमनाई गेस्ट हाउस बाय योर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन. An individual or alumni associations can contribute. Rooms may be named after the contributing alumni. They have a priority in reservation. जब कभी वो आएंगे तो उनका रूम उनको प्रायोरिटी पर रिजर्व किया जाएगा उनके लिए. They can have the interiors according to their taste and theme. जब वो नहीं आ रहे हैं, रूम खाली है, तो यूनिवर्सिटी कैन यूज इट फॉर अदर गेस्ट्स, फॉर ऑफिशियल गेस्ट्स. तो ये उसका प्लान है alumni guest house का, which is coming up, and the alumni will have a priority in reservation for themselves. फिर एक alumni endowment fund ये सेटअप किया गया. IIT दिल्ली started it, और फिर हम लोग के पास भी लेटर आया, everybody should set up an endowment fund. An endowment is a donation of money or property to a non-profit organization which uses the resulting investment income for a specific purpose. फिक्स डिपॉजिट होता है एलुमनाई की तरफ से, और उसके मोस्ट एंडाउमेंट्स आर डिजाइन्ड टू कीप द प्रिंसिपल अमाउंट इंटैक्ट while using the investment income for charitable efforts. Endowment tend to be organized as a trust, a private foundation, or a public charity. There are 4 types of endowments. Unrestricted endowments are assets that can be spent, saved, invested, and distributed at the discretion of the institution receiving the gift. है ना, जैसे कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल. Alumni can contribute and forget. Now the university will use that money.
Term endowments usually stipulate that only after a period of time or a certain event can the principal be expended. उन्होंने पैसा दिया, कहा ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर लीजिए, कॉन्फ्रेंस होने तक ये पैसा कॉन्फ्रेंस की ही एक्सपेंडिचर्स में जाएगा, उसके बाद जो पैसा बच रहा है यू यूज इट द वे यू फील लाइक. दैट इज टर्म एंडाउमेंट्स. A quasi endowment is a donation by an individual or institution given with the intent of having that fund serve a specific purpose. The principal is typically retained while the earnings are expended or distributed as per the specifications of the donor. फिर एक restricted endowment होता है. They have their principal held in perpetuity while the earnings from the invested assets are expended as per the donor's specification. जैसे उसने 1 करोड़ रुपया दिया कि इससे जितना भी अर्निंग्स आएंगी वो स्कॉलरशिप में दी जाएंगी, हमारे फादर के नाम की स्कॉलरशिप पे दी जाएंगी. सो दैट इज अ रेस्ट्रिक्टेड एंडाउमेंट. अब यू विल बी सरप्राइज्ड to see the kind of endowments that the big universities have. According to US News and World Report, the top 5 universities by endowment size at the end of the fiscal year 2017, अब तो और बढ़ गया होगा ये. Harvard University had $37 billion. Yale University has $27 billion. Stanford had $24 billion. Princeton had $23 billion. And MIT had $14 billion of endowments with them. यानी आप सारी एड उनकी बंद कर दें तो सिर्फ अपने एंडाउमेंट की अर्निंग से ये यूनिवर्सिटीज रन कर सकती हैं. They have such a huge endowment with them. अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मेंबरशिप फी. अब इसमें क्वेश्चन मार्क है कि वन टाइम ली जाए या एनुअल फीस हो. क्या रिटर्न्स हम देंगे? ऐसा ना हो कि मेंबरशिप हमने अलुमनाई को दी, वो सारी फैसिलिटीज चाह रहे हो जो स्टूडेंट्स को मिलती हैं, फिर स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे? Likewise, the alumni projects, their action plans, progress updation should be there. Alumni achievements and offers. अब इसमें फिर क्वेश्चन मार है what to include and what to leave out. बहुत छोटी छोटी चीजें देने लगेंगे तो वो एक जरा बिफिटिंग नहीं होगा, लेकिन जिसको एक्सक्लूड करेंगे वो माइंड नहीं करे. तो वेयर टू ड्रॉ द लाइन? वी वांट टू हैव अ स्ट्रॉन्गर नेटवर्क ऑफ एलुमनाई. अभी तो 12,000 प्लस हैं हमारे पास. वी वांट टू एक्सपैंड इट टू ऑल 2 लाख एलुमनाई. एक एलुमनाई न्यूज लेटर अलग से निकले. मोर एंडाउमेंट्स वी नीड टू हैव फ्रॉम देम. And distinguished alumni awards. IITs are giving the distinguished alumni awards because they're very focused technology institutions. हमारे साथ क्या है कि हमारे यहाँ आर्ट्स भी है, साइंस भी है, लॉ भी है, मेडिसिन भी है, इंजीनियरिंग भी है. तो अब डिस्टिंग्विश्ड alumni किस बेसिस पर इसको डिसाइड किया जाए? तो मे बी वी आर थिंकिंग टू हैव अ फ्यू कैटेगरीज. आर्ट्स की अलग, साइंस की अलग, टेक्नोलॉजी की अलग, इस तरह से करके हम डिस्टिंग्विश्ड alumni awards दे सकें. But we are still working on it. These are the future plans. Okay, thank you very much for your attention. I wanted to give you a glimpse as to what you can expect in managing the alumni relations. So if there are any questions. Thank you, sir. Thank you, sir. धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी. Thank you, sir. Thank you, sir. धन्यवाद. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you very much. Thank you, Thank you, sir. sir. धन्यवाद सर. Thank you very much, sir. Thank you so much, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. All of you are welcome. All of you are welcome. अब बताइए कोई क्वेश्चंस, कोई डिस्कशन आप चाहते हैं तो बताइए. सर हॉल अटेंडेंस क्या है? Thank you, sir. हॉल अटेंडेंस मतलब सर आपके जो फॉर्म है, जो आप वर्ड फाइल जो आप शेयर कर रहे हैं. अच्छा, हॉल अटेंडेड, वो हॉल ऑफ किस हॉल ऑफ रेजिडेंस में रहे हैं? अच्छा ओके. We have 19 halls of residence. So which one of them had they lived in? ओके सर. ऑलराइट. थैंक यू सर. Anything else? जी. चलिए, if you have no questions, thank you very much for attending the Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. धन्यवाद. Thank you, sir. Thank you, sir. बहुत अच्छा सर, आपने जो है ज्ञानवर्धन किया. थैंक यू. Okay. Thank you, sir. All the best. Thank you, sir. Thank you, sir.
सर